So let's start our दूर बस्तर का जो है वो बहुत बार आता है। और दो क्वेश्चंस में जो आपका पूछा है बेल्लारी चित्रदुर्ग वाला। तो बेल्लारी चित्रदुर्ग आपका कहाँ है? कर्नाटक में है, जहाँ पे आपको मिलते हैं लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर। और क्या है? वहाँ पे है आपका कुद्रेमुख माइंस, लोकेटेड है वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका, जो कि है 100% एक्सपोर्ट यूनिट, 100% एक्सपोर्ट यूनिट। और कुद्रेमुख डिपॉजिट आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और इसका जो डिपॉजिट है वो है वन ऑफ द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। अब क्या बोला है? और इस कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है और को? और ट्रांसपोर्ट आपका कैसा होगा? थ्रू और ट्रांसपोर्ट एज स्लरी थ्रू पाइपलाइन to a port to Mangaluru port। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग दुर्ग बस्तर ने। हम लोगों ने देखो, जो दुर्ग बस्तर था वहां पे सबसे ज्यादा हाई ग्रेड था, और यहाँ पे था कि वर्ल्ड का मोस्ट ऑफ द कोल यहीं पे, पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल आपको यहीं पे मिलता है। ओडिशा वाला आपका जो ओडिशा सॉरी दुर्ग बस्तर बेल्ट आपका छत्तीसगढ़ में आ जाता है, और ये आपका कहाँ आ जाता है? कर्नाटका में। और यहाँ पे जनरली बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ बस्तर के बारे में आप डिस्क्राइब करोगे, और यहाँ पे आप डिस्क्राइब करोगे कुद्रेमुख माइंस का। और ये दुर्ग बस्तर वाला जो होता है वो स्टील के लिए होता है, और इसको कहाँ पे भेजते हैं हम लोग? दो जगह, एक जापान और एक दूसरा हम लोग भेजते हैं साउथ कोरिया। और ये जो है ये हम सब जगह भेज देते हैं, 100% ये एक्सपोर्ट होता है, ये समझ लो आप, 100% एक्सपोर्ट। अब बोला इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, वैलिडेट द स्टेटमेंट। चलो इसको देखते हैं हम लोग। देखो, आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी starts in a town, urbanization follows। urbanization follow होती है। Industry provides employment to the people of the area। Population migrate from rural centers to seek for jobs, housing and transport facilities developed and accommodate to these people. Other infrastructural development takes place, leading to the growth of development of the city or town। Sometimes industry are located near the cities। Cities are near the cities provide markets and services such as banking, insurance, transport, labor, consultant, and financial advice to the industry। Thus, industrialization and urbanization go hand in hand। क्यों? देखो, इंडस्ट्री आपको क्या प्रोवाइड करती है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे जो पॉपुलेशन है वो रूरल से अर्बन एरिया की तरफ बढ़ती है, और वहां पे बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, जिसके कारण वो अर्बनाइजेशन की तरफ जाती है। नेक्स्ट, advancement of international trade of a country is an index of economic development। क्या है? considered as economic parameter। फिर है yes, रिसोर्स और स्पेस वन, ये मुझे लगता ही नहीं है। ओके, तो ये आपका जो ऊपर वाला क्वेश्चंस है ये आपका नहीं आने वाला, ये नहीं आने वाला, ये नहीं आने वाला।
चलो तो अब यहाँ पढ़ते हैं, व्हाई डिड फ्रेंच आर्टिस्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको। व्हाई डिड फ्रेंच आर्टिस्ट Frederick Surieu prepared a series of print based on Democratic and Social Republic of 1848. ठीक है, तो इसका देखते हैं, पढ़ते हैं। तो to depict his utopian vision where the people of the world are grouped as distinct nations identified through flag and national custom offering homage to the status of liberty. एक बार इसको देख लो। Why did Frederick Surieu prepared a series of print based on democratic and social republics in 1848. तो क्या? To depict his utopian vision. To depict his utopian vision where grouped as distinct nations identified through flags and national customs. Offering homage to next. What was the mean of Treaty of Vienna? Main aim of Treaty of Vienna. So aim was to reserve most of the changes brought by Napoleon during Napoleonic War. Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power next. Idea of Satyagraha. Idea of Satyagraha suggested if the cause is true, the struggle is against the injustice. The physical harm is then not necessary to fight the oppressor without being aggressive. Battle could be won. The idea of Satyagraha. If cause is true, if cause is true, if against injustice, then physical force is not to fight the oppressor. क्या बोले फिर? Rinderpest, ये क्या था? Rinderpest, cattle plague in serious डिफाइन ट्रेड सरप्लस, ये भी नहीं आने वाला। तो जो चैप्टर अभी डिलीट हुआ है ना, उससे 1000 क्वेश्चन बनते थे।
नहीं नहीं, हाँ ये आ सकता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये क्या बोलता है? It was an act passed by colonial government to dam the freedom of press. Government to dam the freedom of press. The act provided the act provided the government with extensive right to censure reports and editorials in the act provided government with extensive rights to censor reports and editorials in vernacular press. वर्नाक्युलर प्रेस मतलब क्या होता है? वर्नाक्युलर मतलब होता है आपका लोकल। क्या होता है? लोकल। नेक्स्ट, what is a die system of checks and balance in power sharing? So under the system, one organ of the government keeps check over the another. None of the organ can exercise unlimited power. This keeps a balance of power in government. Next, two features of federalism. क्या लिख सकते हैं? More than two level of government and different types of government govern the same citizen. Provision in Indian Constitution makes the India as a secular country. Right to freedom, religion to all. So under the right to freedom of religion, all citizens are free to profess, practice or propagate any religion or not to follow any. Main role of नहीं, ये भी नहीं आने वाला है. Comprehensive political power. Meaning of transparency. ट्रांसपेरेंसी आ सकता है. ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या? इन डेमोक्रेसी decision making are based on norms and procedures. Decision making are norms and procedure. A citizen has the right and the means to examine the process of decision making. That's right. To examine the process of decision making. This is known as transparency. Next, in what way does RTI help in people in democracy? देखो क्या है? Such law helps to implement national development, comprehensive term which includes improvement in living standard, people increase in per capita income, providing social amenities. भी लिख लेते हैं national development. ये क्या होता है? Comprehensive term जो कि क्या इंक्लूड होती है? इंक्लूड्स
improvement in living standard, increase in per capita income, providing social amenities. Next, what is GDP? GDP is the value of all the final goods and services produced within a country during a particular year. Central government ministry undertakes the task of measuring GDP. Why one cannot refuse to payment more than rupees in India? Yeah, अच्छा है. So one cannot refuse the payment of rupee in India because it is accepted as a medium of exchange. It is accepted to mean the currency is authorized by the government of India and no one can issue currency except RBI. Basic function of foreign trade. Basic function of foreign trade creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic market markets and their own countries to reach beyond the domestic market market of their own countries. Producers can sell their produce not only in markets located within the country but can complete in market located in other countries. One example of computer बायोटिक यानी बायोटिक रिसोर्स ये भी नहीं आने वाला फिर भी पढ़ लेते हैं obtained from biosphere and have life such as human being flora. मम्मी हाँ पप्पा fisheries and livestock abiotic resource in which are composed of non-living things called abiotic resource. Next, what is JFM? What is JFM? Name the state which was the first to pass. So JFM को लिख लेते हैं. JFM Joint Forest Management मम्मी वो नहीं लो was a movement launched to manage and restore degraded forest by involving local community. तो ये इम्पोर्टेंट है एंड इट कैन बी तो ओडिशा फर्स्ट वाला कौन था ओडिशा इसको लिख लो ऐसे करके कि मूवमेंट लॉन्च टू मैनेज एंड रिस्टोर डिग्रेडेड लैंड्स अब क्या है मूवमेंट लॉन्च टू मैनेज क्या टू मैनेज एंड रिस्टोर degraded forest
forest by involving local communities. ओके, फर्स्ट कौन था? तो वो था आपका फर्स्ट कौन है आपका इसमें? ओडिशा। ओडिशा। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बार रिपीट हुआ ये? 2 बार। चलो साथ। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हमारा? एफएम क्या है? मूवमेंट launched to restore degraded forest. Degraded forest with the help of local communities. Okay, एक मिनट। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, why was considered as a viable alternative of multiple projects and why? बहुत important क्वेश्चन है, बहुत important। तो देखो, disadvantage and rising resistance against multi-purpose projects has led to conclude that the water harvesting system is a viable alternative both socially and environmentally. इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसका आंसर जो डिफरेंट लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ये पहले रिपीट हुआ था। Agriculture which is practiced on a small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dowel, digging sticks and family community level. Then what is the period of kharif crop? तो खरीफ क्रॉप क्या है आपका? जून अक्टूबर नवंबर, जून जुलाई। ऑनसेट ऑफ मॉनसून, सबसे पहले जो हम लिखेंगे ऑनसेट ऑफ मॉनसून और continues beginning of winter season. तो winter season, beginning of winter season, for example rice. Let's next, what does mining, how does mining affect the health of ministers? Health of ministers को mining, sorry, how does mining affect the health of miners? Sorry, इसका क्या है हमारा? तो कि जो dust various fumes inhaled by miners make them vulnerable and to pulmonary disease, then risk of collapsing mine roof, inundation and fire in coal mines are a constant threat to miners. तो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका? pulmonary disease. सेकेंड क्या आएगा? आप लिख सकते हैं coal fires. थर्ड क्या आप लिख सकते हैं एक अलग पॉइंट बना के? collapsing of mine roofs. Next, as aluminium metal has great importance. जो भी फीचर है वो लिख दो। ओके, देखो aluminium metal has great importance because it combines the strength of such as
mixture and with extreme lightness also with good conductivity and देखो इसके पास स्ट्रेंथ है ये आपका लाइट वेट है लाइट वेट है आयरन की तरह इसमें कोरोजन होता है पर उसको वो प्रिवेंट करता है जो उसमें कोरोजन होता है वो ज़्यादा होता है इन टर्म्स साइंस अगर देखो तो लेकिन वो कम हो जाता है इम्परवियस बना देता है नेक्स्ट फर्दर लेवल के लिए तो कोरोजन की समस्या नहीं होती है उतनी और आयरन से ज्यादा केस में ये बेटर है नेक्स्ट What is the arrival of the transportation map of India? Transportation map of India. ये नहीं पढ़ना हम लोग को डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट इन इंडिया नहीं पढ़ना हाँ why was multi-purpose project as temples of modern India by Jawaharlal Nehru? Multi-purpose project integrate development of agriculture and village economy with rapid industrialization and growth of urban area. Modern temple इन्होंने बोला था next. What are the factors of economic viability for reserve? ये भी नहीं पता. हाँ. Concentration of mineral in ore, ease of extraction, closeness to market. ये. Factors affect economic viability of reserve. ये minerals and resource कहते हैं. शायद ये delete हुआ था. इनका delete नहीं. Economic तो इकोनॉमिक वैलिडिटी ऑफ रिसोर्स क्या है आपका कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन ओर कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन ओर फिर दूसरा क्या होगा ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन क्लोजनेस टू मार्केट बस हो गया देखो कोई भी मिनरल आपका इकोनॉमिकली वायबल मतलब जो है वो इकोनॉमिकल का वो है जब उसमें बहुत ज्यादा किसी भी पर्टिकुलर और में आपका बहुत ज्यादा मिनरल हो अगर आपका मिनरल बहुत ज्यादा है तो अच्छा होगा सेकेंड का जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हो वो भी चीप हो थर्ड की उसमें जो क्लोजनेस मार्केट बहुत ज्यादा है तो आप उसको नहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के क्लोजनेस टू मार्केट होना जरूरी है नेक्स्ट तो इस तरह से हमारा जो कंप्लीट हो जाता है और यहीं पे we can end this session but हम लोग एक और कर लेते हैं इसको कर लेते हैं ये वेदांतो वाला हाँ ये होगा हम लोग के लिए तो बोलता है इसमें बोला है कि हाउ डिड nationalism align with imperialism to become the cause of First World War? मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत बार करा है तो nationalism the first half 19th century yet building nation state based on common heritage and identity but at the same time national sentiments became a narrow creed with the limited ends of last quarter of 19th century फिर क्या है nationalism and imperialism encouraged each European nation to pursue its own interest and compete with power. Nationalism aligned with imperialism led to European disaster in 1914. Towards the last quarter of the 19th century,
Towards the last quarter of the 19th century, nationalism could not retain its idealistic liberal democratic sentiments of the first half of the century but became a narrow belief of inadequate end. Nationalist groups became increasingly intolerant, which led to war. Major European powers manipulated nationalist aspirations to further their own imperial aims. Then crucial source of nationalist tension in Europe was area called Balkans. Idea of regional romanticism in the Balkan, together with the disintegration of Ottoman Empire, made this region very explosive. One by one, Europeans nationalists broke away from its control and dependence and declared independence. Next, the Balkan people based their claims for independence or political rights or national proof that they were only independent but were subjected to foreign power. Next, Slavic nationalities struggled to define their identity and independence. Hence, Balkan area became area of intense conflict. Next, entry of rivalry of big powers. Austria-Hungary, Russia, Britain, Germany worsened the situation in the region, and all this led to the First World War of 1914. Next, however, the Silk Routes give an example of vibrant pre-modern trade and cultural links. The Silk Routes are a good example of vibrant pre-modern trade and cultural links and between distant part of the world. They were spread all over land and sea, connecting together vast regions of Asia, linking with Europe and Africa. They existed since before Christian era and thrived almost till 15th century. Indian and Chinese pottery, textiles, spices traveled to Europe. In return, precious metals, gold, silver flowed Europe to Asia. Next, Buddhism, Christian missionaries, and Muslim preachers also traveled via this route. प्रेशियस मेटल आए इंडियन एंड चाइनीज पॉटरी जो यूरोप गई वहां से प्रेशियस मेटल आए बुद्धिज्म जो क्रिश्चियन मिशनरीज और मुस्लिम जो थे वो सब भी धर्म यहीं से फैला फिर और क्या बोल सकते हैं हम लोग और ये कब एग्जिस्ट कर रहा था बिफोर 15 सेंचुरी क्रिश्चियन इरा के भी पहले ये एग्जिस्ट हो रहा था नेक्स्ट why did Roman Catholic Church began to keep an index of prohibited books in mid 19th century एक मिनट
sure. It's just a minute. Just तो अब फिर से इसको स्टार्ट करते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च ने इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिशन क्यों लागू किया। क्योंकि देखो सबसे पहले एक मिनट इसको पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं। नहीं हम ठीक ही है, नहीं डाउनलोड करेंगे। देखो द थिंग इज की ना कि अ, जो रोमन कैथोलिक चर्च चर्च थे उन पे मार्टिन लूथर ने ऐसे बहुत कुछ बोला था। तो उनकी जो इज़्ज़त थी वो चली गई थी, तो अब वो नहीं चाहते थे कि कोई और ऊपर से मिनाक्यू आ गया, वो उसने बाइबल को गलत इंटरप्रेट कर दिया, इसलिए। तो क्या पढ़ते हैं? Printed religious literature stimulated a variety of interpretations of faith, even among the little educated working class since 16th century. Minacchio and Italy Miller reinterpreted the Bible in a way that enraged the Roman Catholic Church. Such instances such instances worried the church about the people reading various interpretations of the religion and questioning of the church. हाँ, तो इससे क्या हुआ कि worried the church about the people reading the various interpretations of religious question and questioning of the church. Hence, it was imposed several controls over publishers, booksellers, and began maintaining an index of prohibition. ये कब आया था? 1856 में क्या? बताओ, आपका इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिशन कब आया था? 1558 में, 1856 नहीं, 1558 में. It is better to download PDF. इसको हम लोग और फाइल्स में रखते हैं. इसको डाउनलोड्स में रखे क्या? यस, डाउनलोड्स में रखते हैं. सेव किया मैंने. टेलीग्राम डेस्कटॉप से अच्छा है. डाउनलोड्स में जाते हैं. टुडे इसको ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट एज. रुको थोड़ा. फिर से स्क्रीन शेयर मैं कर रही हूँ. यस, आ गया. देखो कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे थे. नहीं, यहाँ पे नहीं थे. हाँ, यहाँ पे थे. तो जो भी हम टॉपिक्स रिवाइज करेंगे उनके साथ हम कुछ उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे. इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, ये आपका कब आया था? ये हम लिख लेते हैं. ये आया था आपका 1558 में. कहा था 1558. तो जो भी इसमें क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं. When Roman Church begins its inquisition to repress heretical ideas, Manichaeo was rolled up twice and ultimately executed. Roman Church troubled by effect of popular reading. हाँ, ये पॉइंट मेंशन करो कि troubled by popular reading. Troubled by popular reading and questioning faith imposed several severe controls over publishers and booksellers to maintain index of prohibited books from 1558. कब से इसको किया? 1558 से. देखो मैंने यहाँ पे लिखा है अभी. हाँ, ये मैंने लिखा है. नेक्स्ट देखो.
Print culture created the condition within the French Revolution occurred, giving it three suitable arguments to support this statement. The print popularized the idea of Enlightenment thinkers and traditional superstitions. They advocate reasons people read books by Voltaire and Rousseau. Print created dialogue and debate. Then people started discussion and evaluated the reality. Print literature mocked the reality. This kind of print literature circulated underground, and it created awareness among people from the basis of French Revolution. तो एनसीईआरटी में इसका 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट्स बोला है, तो आपको 3 आर्ग्यूमेंट्स को कैसे डिस्क्राइब करना है? तो सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट है आपका वो लिखोगे आप, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आइडिया ऑफ इनलाइटेड थिंकर्स। तो इनलाइटेड थिंकर्स की जो आइडिया है उसको डिस्क्राइब करने के लिए उस पॉइंट में जो सब पॉइंट्स होंगे तो उसके सब पॉइंट्स में ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे। ओके, 1 मिनट, ये आपका सब पॉइंट है। ओके, अब देखो इसमें ये दोनों सब पॉइंट है। देन प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डिबेट एंड डायलॉग। ये जो आपका पॉइंट है ये आपका सेकंड पॉइंट है। ओके, और सेकंड पॉइंट का सब पॉइंट आपका ये दोनों है। और फिर थर्ड पॉइंट आपका क्या है कि दे मॉक द रॉयलिटी। थर्ड पॉइंट आपका ये है। ओके, तो इस 3 पॉइंट को मैं बताती हूँ कैसे लिखना है, इसमें इतना क्लियर नहीं है। ठीक है, तो प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में लिखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? popularized the idea of enlightenment thinkers. Print popularized the idea of enlightenment thinkers. अब देखो, अब इसमें क्या लिखना है? Collectively, their writing provided critical commentary on tradition, superstition, and despotism. They argued for rule of reason. हाँ, तो थिंकर्स जो थे ये लिख लो, थिंकर्स argued for rule of reason rather than custom. Everything should be judged on through the application of reason or rationality. They attack the sacred authority of church and despotic power, thus eroding legitimacy of social order based on tradition. The writings of Voltaire, फिर क्या लिखेंगे? Writings of Voltaire and Rousseau were read widely, and those who read the books saw the world through new eyes, even they were questioning the critical rational. Second point में हम क्या लिखेंगे? Print created a new culture of dialogue and debate. Print created a new culture of dialogue एंड डिबेट। इसमें उन्होंने क्या बताया? इसमें उन्होंने देखो क्या क्या लिखा है मैंने सब पॉइंट्स में। पीपल स्टार्टेड डिस्कशन एंड इवेलुएटेड द रियलिटी। तो इसमें हम लिखेंगे all values norms, नहीं ये मैं पढ़ रही हूँ। All values norms and institution were re-evaluated and discussed by public that had become the aware of people of power of reason and recognized the need to question existing higher belief. Within this public culture, new ideas of social revolution came into being. हाँ, ये पॉइंट लिखेंगे। तो सब पहला जो सब पॉइंट है वो हम इसी से पीडीएफ से लेंगे। दैट इज कि प्रिंट पीपल स्टार्टेड डिस्कसिंग एंड इवेलुएटेड रियलिटी। पीपल स्टार्टेड डिस्कसिंग एंड evaluated reality.
नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट हम लिखेंगे कि new ideas of social revolution came into being. New idea of social revolution came. अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? By 1780s, there was an outpouring literature that mocked reality. 1780s, by 1780s, outpouring literature mocked reality and criticized. नहीं इतना ठीक है। अब देखो इन दिस प्रोसेस इट रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख सकते हैं कि कार्टून्स एंड कैरिकेचर suggested monarchy remained absorbed on essential pleasure while the common people suffered intense hardship. This literature circulated underground and led to the growth of hostile sentiment against monarchy. ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कार्टून्स and caricatures suggested that monarchy absorbed only in sensual pleasure. इसका मीनिंग समझा रही हूँ। Sensual pleasure and commoner suffered hardship. फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग? Literature circulated underground and led to the growth of hostile sentiments against monarchy. Literature circulated underground and led to the growth of hostile sentiments against monarchy. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ प्रिंट culture cater to the requirement of children. धागा 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 ऐसे बुना रहे। देखो in Europe, primary education became compulsory for the late 19th century. Children become an important category of readers. Production of school textbook become critical for publishing industry. A children press was devoted to literature. Literature for children alone was set up in France, 1857. This press published new works as well as old fairy tales in folk tales. Germany में Grimm brothers, GGG देखो, GG Germany spent years in compiling traditional folk tales story gathered from peasants. What they collected was edited before the story was published in a collection of 1812. Next, anything that was considered unsuitable for children would be and appear vulgar to the elites was not included in the published version. Rural folk tales thus acquired a new form in this way. देखो चिल्ड्रन में यहाँ पे इतना ही पॉइंट दिया हुआ है। चिल्ड्रन प्रेस सेटअप देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितनी बार रिपीट हुआ है ये? 1670 लिख लो। चिल्ड्रन के लिए क्या आया? देखो जो अच्छे पॉइंट्स होते हैं उसको लिखो। कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम 19th सेंचुरी, ये लिखो। कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम 19th सेंचुरी। फिर क्या आया? प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स इंक्रीजेस।
Children press setting. Children press in France in 1857, having new works, old fairy tales and folk tales. फिर 1812 में ग्रिम ब्रदर्स ऑफ जर्मनी compiled traditional folktale in 1812 और जो कुछ भी बर्गर हो उसको हटा देते थे। इन दिस वे प्रिंट रिकॉर्डेड। देखो जो जो टिप है वो बताती हूँ कि देखो बच्चे ने स्कूल जाना शुरू किया, बच्चे ने स्कूल जाना शुरू किया। अब स्कूल जाएंगे तो उनको टेक्स्ट बुक चाहिए, टेक्स्ट बुक चाहिए। अब उनको टेक्स्ट बुक चाहिए तो अब उनको घर आना है तो उनको कहानियाँ सुननी है। तो कहानियाँ सुनने के लिए पहले ग्रिम ब्रदर्स दे दो क्योंकि ये पहले ग्रिम ब्रदर्स ऑफ जर्मनी 1812 वाला एग्जाम्पल देना है। फिर ग्रिम ब्रदर्स के बाद आप दे दो फ्रांस का एग्जाम्पल। फ्रांस का जो आपका था 1858 में हुआ था, 1858 में। ये 4 एग्जाम्पल दे दो बस हो गया। और लास्ट में दे दो कि देखो वो लोग कहानी तो सुनेंगे, पहले तो स्कूल जाएँगे, फिर उनको टेक्स्ट बुक नहीं मिलेगी इसीलिए टेक्स्ट प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, फिर कहानी सुनेंगे, फिर उसमें से कुछ वल्गर हो तो उसको कोई हटा देगा। तो जो जो चीज़ इसमें वल्गर होती थी उसको डिलीट किया जाता था, मीन्स हटा दिया जाता था। नेक्स्ट दांडी मार्च। तो दांडी मार्च क्या था? लेटर टू वायसराय। इसमें ये ऑप्शंस नहीं है ना, कोई बात नहीं, इसको हम लोग हाइलाइट करेंगे। तो Dandi March letter to Viceroy. Mahatma Gandhi believed that salt could be powerful symbol to unite the whole nation. Most of the people, including the British, scoffed at the idea. एक minute. हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा हाँ ठीक है। Most of the people, including British, scoffed at the idea. Abolition of salt tax. Abolition of salt tax was among demands, many demands which were raised by Gandhiji through a letter to Viceroy Irwin. फिर क्या आता है हमारा सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च सॉल्ट मार्च में क्या आता है? सॉल्ट मार्च और दांडी मार्च was started by Gandhiji on 12th March 1930. It was accompanied by 78 volunteers. They walked 24 days to cover a distance of 240 miles from Sabarmati to Dandi. Many more joined on the way. 6th April 1930, Gandhiji ceremony violated the law by taking a fistful of salt. देखो जो आपका सॉल्ट मार्च है वो डायरेक्टली सीडीएम है, ठीक है। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन में आपको क्या देखने मिलते हैं? सॉल्ट मार्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, thousands of people broke salt law. People broke salt in different parts of the country. People demonstrated in front of government salt factory. Foreign cloth was boycotted. Peasants refused to pay revenue. Villagers official resigned. Tribal people violated forest laws. इसमें देखो और डिटेल में अगर आप पढ़ोगे तो अच्छा होगा। तो भी हाँ तो
हाँ, आ गया हम लोग का। सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस ऑन 31 जनवरी 1930 ही सेंट लेटर टू इरविन। इरविन को लेटर कब सेंड करते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। और धागा 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 ऐसे किया रे। ठीक है, ये आपका लेटर कब जाता है इरविन भाई साहब को? तो इरविन भाई साहब को लेटर जाता है 31 जनवरी को जाता है। 31 जनवरी कब जाता है? 1930, क्योंकि 1930 में आपका स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे गांधी जी के कितने डिमांड्स रहते हैं? महात्मा गांधी जी के 11 डिमांड्स रहते हैं। 11 डिमांड्स। डिमांड्स। नेक्स्ट क्या होता है? देखो एक बार शॉर्ट में बताती हूँ। 31 जनवरी 1930 गांधी जी ने उसको लेटर दिया, लेटर लिखा। लेटर में उन्होंने मांगा 11 डिमांड्स। किसके? तो मांगा ये वायसराय इरविन को। वायसराय इरविन को। फिर बोला इसमें से वन ऑफ द डिमांड था कि आप सॉल्ट टैक्स को हटा दो। सॉल्ट टैक्स को हटा दो। अब उसने डिमांड फुलफिल करी नहीं। इसने डिमांड फुलफिल करी नहीं। अब डिमांड फुलफिल नहीं करी तो गांधी जी ने बोल दिया था लेटर में कि डिमांड फुलफिल नहीं करोगे तो हम लोग एक सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। सत्याग्रह लॉन्च करेंगे मतलब सॉल्ट मार्च। उन्होंने सॉल्ट मार्च शुरू किया। क्यों शुरू किया? क्योंकि उनको पता था, मतलब वो ऐसा मानते थे कि सॉल्ट जो है वो सबके द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है, तो इसमें मेरा सब साथ देंगे। तो 17 वॉलेंटियर को लेके वो निकल पड़े दांडी, साबरमती से दांडी। रहते थे साबरमती में, जाना था उनको दांडी क्योंकि सॉल्ट मैन्युफैक्चर करना था। अब उसके बाद कोस्टल टाउन ऑफ दांडी जाते हैं। वहां पे 6 अप्रैल को वायलेट करते हैं। कौन से? 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को वो लॉ को वायलेट करते हैं। लॉ को वायलेट किया उन्होंने। वायलेट किया, फिर वहीं से आपका सॉल्ट मैन्युफैक्चर हुआ और सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत हुई। अब देखो यहाँ पे कैसे ये स्प्रेड, जो ये मूवमेंट आपका कैसे स्प्रेड हुआ। तो फॉरेन क्लॉथ्स को बाइकॉट किया गया। जो भी आपका फॉरेन क्लॉथ्स था उनको बाइकॉट किया गया। उनको बोला नहीं, उसको हटाओ। फिर क्या किया गया? लिकर शॉप को प्रोटेक्ट किया गया। ये तो वही है, पीजेंट शॉप। पीजेंट्स ने रेवेन्यू देने से मना कर दिया। नो रेवेन्यू। देखो इधर गांधी जी ने सॉल्टो लॉ वायलेट, उधर फॉरेस्ट लॉज जो थे वो भी वायलेट किए गए। और क्या किया गया? जो विलेज ऑफिशियल्स थे वो रिजाइन दे दिए। विलेज ऑफिशियल्स उन्होंने रिजाइन दिया। तो ये सारा किस्सा कहानी आपको लिखना है। देखो 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। लेटर, पहले लेटर, लेटर नहीं दिया तो क्या हुआ? मूवमेंट लॉन्च हुआ। मूवमेंट लॉन्च हुआ तो पीपल पार्टिसिपेशन ऐसा हुआ, वही सब है बस। नेक्स्ट है, हाउ डिड द पीपल बिलोंगिंग टू different communities, regions, or language group develop a sense of collective belonging in the 19th century? देखो तो आइडिया ऑफ भारत माता आता है। जो लिखा है पहले उसको कवर करते हैं हम लोग। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा, थोड़ा सा और। चलो हो गया। तो आइडिया ऑफ भारत, तो आइडिया ऑफ नेशन इज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज कैसे किया गया? तो आइडिया, इमेज ऑफ भारत माता। इमेज ऑफ भारत माता तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नेम याद रखना, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा। क्या लिखा उन्होंने? वंदे मातरम लिखा। और एज अ हाइम टू मदरलैंड, फिर क्या होता है? नोवेल आनंद मठ इंस्पायर्ड नेशनलिज्म। फिर क्या? मूव्ड बाय स्वदेशी मूवमेंट, अबिंद
Rabindranath Tagore painted Bharat Mata portrayed as a static figure, calm and composed, डिफाइन एंड स्पिरिचुअल। देखो ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं कि वो अभिनाथ टैगोर में जो भारत माता तो कैसी थी, डिवाइन थी, स्पिरिचुअल थी। ये सारे पॉइंट्स आपको ले एस्थेटिक फिगर ये भी लिख लो। नेक्स्ट क्या था? आइडिया ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप थ्रू मूवमेंट ऑफ रिवाइव टू इंडियन फोकलोर। उसके बाद आइकन्स एंड सिंबल्स इनका भी रोल था ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राइकलर फ्लैग फर्स्ट डिजाइन। फिर आप एग्जांपल दे सकते हो गांधीयन फ्लैग का, जिसमें आपका रेड, ग्रीन, व्हाइट। रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड। देखो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत तरीके से आ जाता है। ओके, मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना है। हर एक पॉइंट से ये क्वेश्चन बनता है। 6 पॉइंट्स इसमें दिए हुए टोटल, आपको मिलेंगे पूरे 6 पॉइंट्स। कभी क्या होता है कि जो 6 पॉइंट्स है हर एक पॉइंट को 3 मार्क्स में डिस्क्राइब करने के लिए आता है। तो सबसे पहले जो है एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल, तो 1857 के बारे में आप डिस्क्राइब करोगे। देन सेकंड आपका इमेज ऑफ भारत माता, तो क्रिएटेड बाय फर्स्ट लिखोगे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिसमें वंदे जिन्होंने वंदे मातरम लिखा 1870s में। और हैंग टू मदरलैंड था। और ये इनका नोवेल आनंद मठ में है, जो स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में बहुत ज्यादा यूज किया गया एज अ मोटिवेशन। और उसके बाद आप लिखोगे अबिंद्र नंदन, सॉरी, अवनींद्रनाथ टैगोर जिन्होंने भारत माता का इमेज एज अ स्टैटिक फिगर, काम एंड कंपोज, डिवाइन, स्पिरिचुअल किया। फिर उसके बाद भारत माता के डिफरेंट फॉर्म्स सर्कुलेट होने लगे। फिर डिवोशन टू द मदर फिगर केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म, ये लिख लो। ठीक है, फिर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर, इसमें आप रोल ऑफ फोकलोर लिखोगे। फोकलोर में तो आप ऐसे लिखोगे, तो लेट 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म बीन कैसे हुई, तो रिकॉर्डिंग फोकलोर। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि ये बोला जाता है कि जो भी टेल्स है वो आपको बताते हैं कि गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर, और जो कि डैमेज हुई आउटसाइड फोर्स से। तो फोक ट्रेडिशन को रिवाइव करना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी एंड रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड। तो एक एग्जाम्पल दे दो, रविन्द्रनाथ टैगोर himself began collecting ballads, nursery rhymes and myths led to the movement of folklore। और मद्रास में नटेशा शास्त्री का एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। पब्लिश द 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोकलोर, जिसका नाम क्या था? फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। वो बिलीव करते थे कि ये लोग नेशनल लिटरेचर है फोकलोर, और इसको रिवाइव करना है। फिर आइकन्स, रोल ऑफ, जब आइकन्स और सिंबल आ जाए तो अब स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल में, वहां पे ट्राई कलर जो फ्लैग था, रेड ग्रीन येलो, उसको डिजाइन किया गया, जिसमें एक लोटस था रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम। और फिर लिखोगी 1921 में जो गांधी जी का स्वराज फ्लैग था, वो एक ट्राई कलर था रेड ग्रीन व्हाइट में, जिसके बीच में स्पिनिंग व्हील था, और जो कि गांधीयन आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प मानता है, और सिंबल ऑफ डेफिएंस बताता है। फिर लिखोगे आप लास्ट वाज री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स की इंडिया बिगिन लुकिंग इनटू पास्ट, डिस्कवर इंडिया ग्रेट अचीवमेंट। फिर लिखोगे कि दे रोट अबाउट ग्लोरियस डेवलपमेंट्स इन एंशिएंट टाइम्स। फिर थर्ड क्या लिखोगी कि देयर व्यूज वाज फॉलोड बाय अ हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड। फिर ये लिखोगे कि वो लोग इंडिया को प्रिमिटिव और बैकवर्ड समझते थे, और इंडिया का जो सभ्यता था वो इतना ज़्यादा समृद्ध था।
इतना ज़्यादा डेवलप्ड होने के बाद वो कॉलोनाइज़्ड हो गया, ये सब लिखोगे तो ये सारे 6 पॉइंट्स को डिस्क्राइब ऐसे करेंगे हम लोग। ओके, फिर क्या है? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट कैसे है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से? तो वो देखते हैं, वो पढ़ते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में यहाँ पे तो इसमें मुस्लिम पार्टिसिपेशन जो था, वो बहुत ही लो था और इसमें मुस्लिम पार्टिसिपेशन जो था, वो बहुत ही हाई था। ये मेजर पॉइंट हुआ आपका। फिर क्या है मेरा क्वेश्चन? Let's end this session.